So this is the problem number 3. In this problem, following are the bearing observed while traversing with a compass an area where local attraction was suspected. So I'm just highlight this line. Find the correct bearing of line and also true bearing if the magnetic declination is west. So just if the magnetic declination is 10 degree west, it means this is your north. Then the magnetic declination or the magnetic meridian will be like this, okay, toward the west, and this is 10 degree. So these are the bearing, okay. So these are the bearing means uh, this is true bearing. So every angle in this table which is given in column number 2 in terms of fore bearing will be taken from the true meridian. Okay, so here they are saying also the true bearing. So if I just finish this first sentence, according to first sentence, these values are your true bearing. But when I move forward to the next sentence, which says that find the correct bearing of the lines and also the true bearing if the magnetic declination is 10 degree, means in this question now the column number 2 and 3 will be converted into magnetic bearing. Okay, so these values are not taken from the true meridian. These values are taken from the magnetic north directions. Okay, so we just analyze this question. Now we come to the solution part. First of all, we just apply the check formula. As I said, the check formula for this condition given by the back bearing is equal to, it is the fore bearing plus minus 180 degree, or in simple word you can say that back bearing minus fore bearing, the difference of the reading between column number 2 and column number 3 will be equal to 180 degree. So in the simple word, this is your check formula. Now apply this check formula to this column number 2 and column number 3. So can anyone tell me that which reading shows right value and which reading shows wrong value? Means now you have to move row wise row like this. This is the row 1. In this line AB have fore bearing and back bearing. So what is the difference between FB and BB of line AB? 180. 180. 180, 180. It means the row number 1 is clearly is your correct reading. Okay, now move to row number 2, and which is given by the line BC. So BC line fore bearing and back bearing check करिए. In row number 2, the check formula is not applicable. It is applicable, but the value is not is equal to 180 degree. Hence we can say that the row B is something wrong in the reading of column number 2 or column number 3, but we will find this something wrong which is called as local attraction later on. Now move to row number 3, which is represented by the line CD, and we apply the same check formula for these two value for back bearing and fore bearing value. Then we find that there is clearly seen that this is 15 degree, this is 30 degree, then the difference is not equal to 180 degree. So this is all also taken as wrong, or we can say that something which is appear here is local attraction. Now we move to the next. Again there is the line DE. It is 8 here and there is 9 here. So once again this is not free from local attractions. These value are
taken from the station where local attraction has been found. And last one is EA line. In this line also you can see that 30° and 45°. So this is not is equal to 180°. So in our final list, what we can say that we have only one row, which is row number 1, which give your right reading according to check formula. So in this case, what we will do, we will assume that our both station A and B, both the stations is free from local attraction. In this case, the reading taken from the A point and reading taken from the B point will always correct. Now reading taken from the A point is the forward-bearing reading of your line AB and back-bearing line of your AE, because the both, when you are taking the back bearing, it means you have gone through the last point, and when we take the forward bearing you have considered your first point. So in the case AB, the forward bearing will be taken at a station, and in case of back bearing of EA line, that will be taken from the point A station. So this is the first one you have to understand. The second thing you have to mention in this question is your B station is also correct. So the back bearing of line AB will also correct, which is taken from the point B, and the forward bearing of line BC, which is taken at the base station, is also correct. So there are the two color coding I have show here. The first one is blue one and dark blue and sky blue. So in this case you can easily identify. So this is the first approach when you start your numerical. These are the first approach which you have to consider before going to the solution. Okay, this is a universal approach. Before going to solution you have to just find the स्टेशन हु इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन. तो ये आपको हर उसमें करना है. इसको क्लियर है आपको? नाउ यू जस्ट take the reading from B point, calculate how much amount you have to add or subtract in the back bearing of PC line, so that it will be the difference between FB and BB will be 180 degrees. So this is the correction value, add or subtract, like this plus minus C. Okay, this correction value you have to add on station C. So when you apply this correction in on station C, by default this will applicable for this point also. And in this point, if we take the value of FB for bearing of CD line, this 250 15 degree 15 minute is the reading which is taken from the C station. Hence the corrections which we apply for the back bearing of BC line will be same in added in the FB of CD line. Okay, so this value will be changed. Now their new value will be here, which is your correct value. Again you will find from the new value how much correction you have add to this BB of CD line, which gives you exactly 180 difference between FB and BB. So that is the correction number 2, and this correction number 2 is involved with your D point. So this is the pattern you have to follow for solving this numerical. After all, when you find the all correct forward bearing and back bearing, you have to make another table, and on that another table what you will do, if your magnetic, these are your magnetic bearing I told you earlier. Now you have to just minus this 10 degree from the all reading, because these reading are in quadrant. This is whole circle bearing, like this is the whole circle bearing. Okay, this is taken in the clockwise direction. This is the whole circle bearing reading. So in the whole circle bearing, if you minus this 10 degree, because it is moved toward the west, so if you move 10 degree,
from the all values, so that will is your true bearing. If this is like something like this 10 degree east, then we add 10 degree, because this figure, if our magnetic declination is 10 degree east, it means your magnetic north in this direction and you are taking all reading from this direction. For true bearing, we just add 10 degree, so that all reading will be taken from the true north. So this is the concept related to magnetic declination. We earlier practiced this all, and we are good enough to solve this numerical problem number 3. Okay, now we move to problem number 4. Please read this. Please analyze this problem before we discuss. So this is the problem number 4. Says the following bearing were observed at a place where local attraction was suspected. Again, this is the problem is related to a local attraction. Find the corrected bearing of the lines. So you have to find the correct bearing. So in this problem there is no magnetic declinations, hence we can say that the value in column number 2 and column number 3 are your true bearing. Okay, these values are taken from the true meridian. So there are two approaches to solve this problem number 4. The first approach is convert this problem like the problem number 3. Means you have to convert these value of column number 2 and column number 3 into reduce bearing, into WC bearing. Okay, WC bearing, because these values are your reduced bearing. So you have to convert reduced bearing into WC bearing. This is the first approach, and then apply all the steps which you uh, used for problem number 3. So this is the first approach. Okay, another approach is just solve this numerical like as it is given in the form of reduced bearing. You don't need to correct, you don't need to convert this readings into WCB. So this is the second approach. Now I am moving with the second approach so that you will understand both the numericals separately. So let me take care of this. Okay, so when we are solving the numerical in reduced bearing, it is very easy to find the 180 degree to apply the check formula. Why? Because if in this reduced bearing the values remain same, only the direction will change. You have to check south will be replaced by the north and east will be replaced by the west, and vice versa. Okay, so the first line, which is represented by the row 1 line AB, if we apply the check, so in this case both the readings are same, only the difference is direction difference, and which is according to this, it means this is free from local attraction. Again move to the row number 2, represented by the line BC. In this case this is 60 degree 0 minute, in this case 60 degree 40 minutes. So this is 40 minutes uh, is the problem, is the local attraction problem. Okay, so this is in this first approach, this is wrong. Again we move to this is 5 degree, this is 3 degree, drastically change, wrong. 83 degree 30 minute, 85, again this is. So now you can see that this is similar to problem number 3. Okay, and after that I am not solving this because I already told you that what is the second step. This is the first step, and now the second step is you have to assume your A point and B point, like this is a B point, this is the A point, are free from local attraction, and the reading taken from these 2 points are also free from local attraction. Now assume the reading
from these 2 points and just follow the corrected value to another point so that your checks will be applicable. So this is the second approach. This is the second step. Then you have to move to third step, in which you have to correct these all value and prepare another separate table. So like this, there is a line, there is a fore bearing, and this is the back bearing, and this table gives you corrected value. Okay, this is the calculated value. Calculated, you have to draw a table which is given by the corrected value after the completion, after the solution of this numerical. So this is the problem number 4. Okay, you have any doubt related to problem number 4, please ask. Now Yes, sir. move to problem number 5th. So we already discussed two problems, and we are just finding the patterns between these numericals so that we can easily solve this problem number 5 also. So first of all, you have to read this problem and highlight the important points. The following bearings, again there is only a single bearing. The following bearings were observed where local attraction was suspected. Calculate the actual bearing. Okay, so in this case again there is no magnetic declinations terms is used, so we assume this all bearing is your true bearing, but these bearing are your calculated by your compass, so it may be some of the points affected by the local attractions, so we have to find those points. So this is the step number first. Again the same process, repeating step 1. This is a repeating mode. Okay, these type of numerical having some type of patterns, and we just find those patterns, and with the help of practice lot, you will master this pattern. The first one is check between a difference of fore bearing and back bearing is exactly 180 degree or not. This is the first step. Now this is again this question, the reading in this question are reduced bearing, so we don't need to change because reduced bearings are comparatively needs less effort to WC bearing. Okay, so 40 degree, 30 degree, 41, no. 80 degree, 45, no. 19 degree, 20 degree, no. 80 degree, 80 degree. So only the last one value is corrected, means number of points which is free from local attractions are station D, station A. Now this value is mean D पॉइंट से जो वैल्यू ली गई और A पॉइंट से जो वैल्यू ली गई वो सही होंगी, तो ऑटोमेटिकली by default the fore bearing of line AB is corrected. Okay, and back bearing of line CD is corrected. Now apply the amount of correction in this value so that it will be gives 40 degree 30 answer, and it will be like that 1 degree 15 minute minus, this is the correction one. Okay, so this is the correction one applicable on your station number 2, and station number 2 is your B point. So 1 degree minus 1 degree 15 minute, this value is reduced in back bearing of line AB, you will get your answer for 40 degree 30 minute. Okay, and the direction are also, please look at the direction. South will be changed from the north, west change from the east. So this is the correct approach. So approach, the finding the correction is your step number 2. And what is the last step? This step number 3 क्या है आपका? Step number 3 आपका क्या है? You have to prepare a table with 3 columns and number of rows. The first column represent line, second one is FB, third one is BB. So this is the third step, and the last step, if this step number 4 is depend on your question. If in this question, if there is a comment on the internal angle, then you have to follow the step number 4. Okay, but in this question there is no points regarding the internal angle, so we don't need to go with the step number 4, and we will discuss later on what is the step number 4. So this is the problem number 4. We just need to solve these 3 steps. ठीक है, तो ये 3 steps are the repetitive steps in the problem number 3 and problem number 4. The same approach we apply here. Now we move to next problem. Problem number 6. Please read this problem before I discuss.
Problem number 6. The following are the bearing observed in traversing which is a compass with a compass. Okay, the following are the bearing observed in traversing. Traversing means series of connected lines, and here two types of traversing, one is open and one is closed traversing. We will see later on with the following reading. An area where local attraction was suspected, so I'll highlight these points. The amount of local attraction at different stations. So find the amount. So you have to find that correction C1, C2, C3 add in different stations, which is in step number 2. Okay. The correct pairing of lines is step number 3, where you have to prepare a table related to correct forebearing and corrected back bearing lines. And the included angle. Now you have to comment on the step number 4. I have to tell you what is the step number 4 applicable in this question. Okay, draw a sketch. Assume this we already discussed. Show in all it internal angle. This is the internal angles related. So this draw a sketch is related to a sketch number. This is step number 5. So this is the complete question of the traversing numerical, okay, in which we applicable all the step which is related to step 1 2 3 4 and 5. तो 5 स्टेप आपके पास टोटल है और 5 के 5 हम यहाँ इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, तो इसीलिए ये कंप्लीट अप्रोच है प्रॉब्लम नंबर 6 को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 करिए, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में क्या है, फाइंड द स्टेशन हु इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। तो चेक करना है हमें वही चीज जो स्टेप हमने फर्स्ट में करा था। तो आई थिंक द फर्स्ट वैल्यू इज करेक्टेड बिकॉज 59 and 39, okay, here is 30 minute, here no, this is wrong, this is wrong, this is another one wrong, this is wrong. So AB stations are free from local attraction. It means this value is also corrected, and the last one is also corrected value. So these are the 4 values which are free from local attraction. After the doing this, step number 2, find C1, C2, C3 and so on the different station. These are the local attraction. Now how much amount you will add or subtract in this value so that it will give the correct difference between forebearing and back bearing is equal to 180. So that amount which you add or subtract is known as correction 1. Similarly, you have to find correction 2. This correction 2 is applicable to D point. This correction 1 C1 is applicable for C point, and the last one is applicable for amount which you add in this just going with the row number 3, row number 4 DE line. So the amount which you add after correcting this 208 degree with the help of C2 value, the amount which you add in the back bearing of line DE will be taken as correction 3, and this is the correction 3 in station number E. Okay, then you have to find the step number 3, which is prepare a table having corrected value. Okay, and the last one is internal angle, which is step number 4. For this you have to draw your figure with the help of step number 3. तो स्टेप नंबर 3 में जो आपकी करेक्टेड वैल्यू है उसकी वजह से आपने जो फिगर बनाया है, एंड देन अप्लाई द इंटरनल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करा, देखिए मेरी बात सुनिए, आपने क्या करा, आप ये सॉल्यूशन जो आपने बुक में दे रखे ना, आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक सिस्टमेटिक पैटर्न बना रहा हूँ और आपको वही सिस्टमेटिक पैटर्न से करना है, तो आपको आंसर सही होगा। सबसे पहले आपने बेयरिंग सही कर दी, क्योंकि देखो क्वेश्चन में भी इसी तरीके से पूछा गया था।
अगर आप ध्यान दो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर ध्यान दो, सबसे पहले लोकल अट्रैक्शन फाइंड आउट करिए, विच इज वी ऑलरेडी फाइंड इन टर्म्स ऑफ C1 C2 C3। देन करेक्टेड बेयरिंग लाइन निकालिए, विच वी ऑलरेडी कवर इन स्टेप नंबर 3। एंड लास्ट में इंक्लूडेड एंगल निकालिए। ठीक है, यही था ना क्वेश्चन का सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी यही थी। एंड वी जस्ट फॉलो दिस क्रोनोलॉजी in our answer also. First we find C1 C2 C3, then we draw a table which is corrected angle, and then last one is we just draw a figure and find the internal angle with the help of figure. But this figure is not corrected because in this case you are deal with the calculated angle. Okay, maybe this angle are not corrected, so you have to correct this angle with the help of check formula. And you already know this check formula, which is equal to 2n minus 4 whole multiplied by 90 degree. Find the summation of all internal angle, and this summation of all internal angle represented by the a dash, and the corrected value is represented by the capital A. Now if the a dash is equal to a, then you don't need to add any value with your internal angle. If this is this is not equal to, then you have to find the corrected value. तो ये आपको करना था। ठीक है, समझ में बात आई? यस सर। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। तो ये आपका क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। यस सर। लेकिन इस चीज में एक प्रॉब्लम है, अगर आप ध्यान दो तो देखो, कभी भी हो इसमें एक प्रॉब्लम है। बताओ क्या प्रॉब्लम है, बताओ। मैंने आपको सिस्टमेटिक बताया, क्रोनोलॉजी बताई, फिर आप मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम भी है इसमें। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, सपोज आपने एक इंटरनल एंगल निकाला किसी चीज का, तो सबसे पहले आपने क्या कर दिया, इसकी बेयरिंग को सही कर दिया। तो मान लो ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट है। ध्यान देना इस चीज को, मैं बिल्कुल क्वेश्चन का ऑपरेशन करके बता रहा हूँ। तो जब आपने सबसे पहले ए से बी आपने एज्यूम करा कि सही वैल्यू है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ही फोर बेयरिंग जो होगी वो किसकी, ए डी की, वो आप सही ले रहे हो, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू। एंड सिमिलरली बी पॉइंट से सी पॉइंट जब आप जा रहे हो, तो फोर बेयरिंग ऑफ बी सी भी आप क्या ले रहे हो, सही ले रहे हो। ठीक है, यही मतलब हुआ ना इसका, अगर आपका ए पॉइंट एंड बी पॉइंट सही है ना? यस सर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे ये चीज हो रहा है कि अब ये फोर बेयरिंग है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। ये इस तरीके से लिखा जाता है, बैक बेयरिंग ऑफ डी ए लाइन, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यस सर। ठीक है, अब होता क्या है कि आपने क्या करा, सबसे पहले बेयरिंग को सही कर दिया। अब बेयरिंग को सही करने के बाद आपके इंटरनल एंगल निकाले। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, दिस इज द A1 B1 C1 एंड D1। अब आपने इंटरनल एंगल निकाले। अब इनका समेशन आपने जब किया तो ये A डैश करके आया, दिस इज मान लीजिए कोई वैल्यू आई X, और आपका जो करेक्टेड एंगल है जो फॉर्मूला से आया है 90 डिग्री, वो आपका A आया है। ठीक है, अब A डैश और A में तो डिफरेंस है, क्लियरली दिख रहा है, यस सर। है ना? तो अब क्या कर रहे हो आप, अब आप मुझे बताइए, आप क्या कर रहे हो, आप क्या करोगे, आप वही करोगे, ये करोगे, x2 माइनस x1 निकालोगे। अब जितना होगा पॉजिटिव माइनस जितना भी होगा, वो आपका जो है वो एरर है, और इसी को ही आप क्या करोगे, इसका साइन उल्टा कर दोगे तो वो करेक्शन हो जाएगा, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो करेक्शन हो जाएगा, और ये करेक्शन को डिवाइड कर दोगे आप जितने नंबर ऑफ एंगल्स है, इन दिस केस नंबर ऑफ एंगल आर 4, और उसको क्या कर दोगे, फिर ऐड कर दोगे इन सारे एंगल्स में, ऐड या माइनस कर दोगे, जो भी आपका आंसर आया। तो आपने क्या करा, C1 को रिप्लेस करा, फिर यही वैल्यू से आप D1, उतनी ही वैल्यू आप कहाँ ले गए, A1 में ले गए, और यहीं से देखिए B1। तो मतलब आपने FM में भी कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी होगी। तो सपोज दिस इज योर Q, दिस विल डिवाइडेड इनटू Q1 Q2 Q3 Q4 एंड दीज आर द इक्वल इन सेम अमाउंट में आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसे हुआ, यस सर। ऐसा हुआ। लेकिन इस इंटरनल एंगल की वजह से फिर आपके क्या हो जाएंगे, ये बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग क्या होगी, चेंज हो जाएंगी, क्योंकि आपने जब करेक्टेड बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग से निकाला था उससे तो आपका A1 निकला था ना,
वो करेक्ट था। वो अकॉर्डिंग टू द करेक्टेड बियरिंग निकला था A1। अब आपने फिर से इसमें कोई एरर जो कि ऐड कर दी जिसकी वजह से ये चेंज हो जाएगा, तो अगर ये चेंज हो गया तो फिर तो आपकी बियरिंग फिर से तो चेंज हो बेरिंग जाएगी। फिर से। तो आपका वो यस जो सर। प्रोसेस था स्टेप नंबर 4 तक का या स्टेप नंबर 3 तक का, वो तो गलत हो गया फिर से। तो इसीलिए क्या करते हैं हम इन न्यूमेरिकल में हम क्रोनोलॉजी जो दे रखी है सॉल्यूशन की, वो क्रोनोलॉजी तो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हम उसे करेंगे तो हमारा अल्टीमेट आंसर क्या आएगा, गलत आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले ही सारे करेक्शन करते हैं। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको उल्टा करते हैं इन क्वेश्चन को। सो वी जस्ट फाइंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरनल एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, और इंटरनल एंगल फाइंड यस करने के सर। बाद पहले इंटरनल एंगल को वो कर दीजिए, करेक्ट कर दीजिए। ठीक है, यस सर। कहने का मतलब ये है कि आप ए बी सी के बीच का जो इंटरनल एंगल है उसको आप करेक्ट कर दीजिए। अब सपोज ये 10 डिग्री रहा, ठीक है, ये 10 डिग्री है, कहने का मतलब ध्यान से सुनिए इस चीज को। तो ये 10 डिग्री आपने करेक्ट कर दिया है इसको, तो ये 10 डिग्री ऐसा ही रहेगा, भले आप इस फिगर को ऐसा बना लो। अब देखिए, ठीक है, मेरी बात समझ में आई? आपने इस फिगर को ऐसे बना, या यस आप सर। इस फिगर को ऐसे बना लो। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा सही बनाता हूँ, आपको समझ, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको प्लीज, इसीलिए मैं इसको हिंदी में भी समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये ए फिगर है, सॉरी, दिस इज द फिगर नंबर 1, दिस इज द फिगर नंबर 2। नाउ वी मूव टू अनदर फिगर which is like this, A B C, and it is the 10 degree, this is the figure number 3। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपने 10 डिग्री फिक्स कर दिया इंटरनल एंगल। अब आप क्या करो, अब आप बियरिंग को चेंज कर रहे हो। इन केस दिस इज योर ट्रू मेरिडियन, तो आपने क्या किया, इस लाइन की बियरिंग मतलब बी पॉइंट से ए बी लाइन की बेयरिंग चेंज करी है। सिमिलरली बी पॉइंट पे अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो यहाँ पे इसकी बेयरिंग चेंज हुई है, और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में ही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इंटरनल एंगल चेंज करे, ठीक है, फिक्स कर दिए, उसके बाद अगर आप बियरिंग चेंज करते हो तो इंटरनल एंगल में कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। दिखाई दे रहा होगा आपको क्लियरली 1 2 3 फिगर में बियरिंग में फर्क पड़ रहा है, लेकिन इंटरनल एंगल आपके फिक्स है, तो इंटरनल एंगल में फिर फर्क पड़ ही नहीं रहा। और आप बेयरिंग को फिर इस तरीके से एडजस्ट करते हो इसके बाद कि आपने सबसे पहले क्या किया, ये इंटरनल एंगल फिक्स करा, फिर एक की बेयरिंग को फिक्स करा, फिर दूसरे की जब आप बेयरिंग लेते हो तो उसमें आप क्या करते हो, इस इंटरनल एंगल को क्या करते हो, एंटरटेन करते हो, इस इंटरनल एंगल को यूज करते हो टू फाइंड द बेयरिंग ऑफ अनदर लाइन। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर मुझे इस लाइन की बेयरिंग निकालनी है, BC लाइन की बेयरिंग, तो उसमें ये मैं इस इंटरनल एंगल को ऐड करता हूँ, करते हैं, है ना? यस तो सर। इस वजह से क्या हो जाता है कि अब आप क्या कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट आपने एक को सही करा, एक लाइन की वेरी को सही किया, उसमें आपने ये इंटरनल एंगल को जो कि आपने करेक्टेड वैल्यू निकाली है पहले वो सही करी हुई है, उसको आप यूज कर रहे हो, तो जिसकी वजह से ये आपका सी पॉइंट जो नेक्स्ट बेयरिंग है वो भी आ जाएगी लाइक दिस। तो जब नेक्स्ट बेयरिंग आ जाएगी इस तरीके से, दिस इज द, इसको ले लीजिए हम, इसको सपोज दिस इज योर 30 डिग्री, हालांकि 30 डिग्री नहीं होगा, 5 डिग्री होगा क्योंकि छोटी वैल्यू है। assume that bearing of this line is your 5 डिग्री। अब अगर BC लाइन का 5 डिग्री है, उसमें मैं इंटरनल एंगल ऐड करा तो मेरा क्या बना, ये पूरा बन गया, तो ये कितना हुआ, 15 डिग्री हुआ। तो मैंने ये 15 डिग्री जब निकाला तो इसमें मैंने ये 10 डिग्री ऐड किया ना इंटरनल एंगल, तो इस वजह से जो ये बेयरिंग निकलेगी BC लाइन की, वो अब क्या निकलेगी, सही निकलेगी। तो यहाँ पे हम ये अप्रोच लेके चलते हैं। समझ में बात आया, बात समझ में आई? तो यही यस चीज सर। आपके बुक में भी दी हुई है, इसीलिए बुक की वैल्यू, बुक के भी ना आंसर को एनालाइज करना जरूरी है कि क्यों इसमें ये प्रोसेस लिया है और क्यों हम वो वाले प्रोसेस नहीं ले सकते। तो इसीलिए सबसे पहले आपको इंटरनल एंगल फाइंड करने हैं रफ फिगर के थ्रू, ठीक है, एंड देन यू हैव टू करेक्ट दिस वैल्यू। करेक्ट करने के बाद क्या करना है, इनको बेयरिंग निकालनी है एंड देन फाइंड योर
ट्रू बेयरिंग, और उसके बाद स्टेप नंबर लास्ट में आपका स्टेप नंबर 3 जो टेबल बनाना है वो बना दीजिए, और साथ में यहाँ पे इंटरनल एंगल जो कि करेक्टेड इंटरनल एंगल है उसको भी आप डाल दीजिए. तो दिस इज योर फाइनल solution. Okay, so this same approach, which is used in problem number 6 is applicable for your future respective numericals. Okay, जो फ्यूचर में अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो सेम अप्रोच होगी. तो प्लीज नोट डाउन, इस न्यूमेरिकल को नोट डाउन करिए और इस न्यूमेरिकल को आज ही करिए. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर. थैंक यू. हैव